class 7 students, welcome all of you in this online sessions. As you all know that from today we'll continue our online class. So you all know that due to the COVID-19 pandemic, all school will closed, so we'll have to continue our classes in online mode. So today topic is what? Triangle inequalities. We have already learned in our offline classes in school, that is 15a and 15b, that is properties of triangle we have done in there. So today in online class we will continue, we will start from the triangle inequalities, that is 15c exercise. So what is its mean? Triangle inequalities, man. According to triangle inequalities, here is the sum of any two sides is always greater than the third side. That means here let a, b and c are the three sides. That is a you have given it as a triangle, that is abc. Abc is a triangle, abc is a triangle. So a is a side of ab, b and c. So according to triangle inequalities, when it is possible, so हम लोग ये ट्राइंगल इनइक्वालिटीज पढ़ते क्या हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि इफ यू हैव ओनली गिवन द थ्री साइड्स, देन हाउ कैन यू डिसाइड वेदर योर ट्राइंगल विल फॉर्म और नॉट। आपके जो तीन साइड्स गिवन है, क्या उससे आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, आप कैसे जानोगे? तो ये रूल बताया। तो क्या है, अगर आपका तीन साइड गिवन है तो दो साइड का जो सम होगा हमेशा, दैट इज a प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड when you add c plus a, b and b plus c, a। मतलब ये तीनों में चेक करना है आपको। मतलब क्या कि अगर किसी दो साइड को अगर आप ऐड करते हो तो वो तीसरे साइड से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बड़ा होगा। अगर वो बड़ा नहीं होता है, if these all three data, that is which you have given, the three measure of sides not fulfill the triangle inequalities, then you will not have to form with a required data। जो डाटा गिवन है अगर वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है तब उससे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। बस इसी चीज़ को हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में या 15c में हमको करके दिखाना है। सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 15c, ओके, विच इज बेस्ड ऑन द ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। क्या है वो? ट्राइंगल इनइक्वालिटीज है, that is 15c, exercise 15c. So in question number 1 of, I am taking question number 2 here, that is you have given three sides measurement 2 centimeters, 3 centimeters and 4 centimeters. So according to what? Triangle inequalities, that is 2 plus 3 is equal to what? 5. 2 plus 3 5, which is greater than 4. Now 3 plus 4 what? 7, which is also greater than by 2, and 2 plus 4, which is greater than what? 3. So these three data, that is the measure of the all sides, or fulfill the triangle inequalities. So you can write here, so it is possible to form triangle by using these three values। ओके, इट इज वेरी सिंपल। तो इस तरह से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, आपको चेक करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन 1 ऑफ, that is question number 5. See, it is very quite different, that is 6 centimeter and 7 centimeter and 14 centimeters. Okay, so according to, again right here, according to triangle inequalities, what? 6 plus 7 what? 13, and what is the third side here? 14. So according to triangle inequalities, the sum of two sides, any two sides is always greater than, कोई भी आप साइड को सम कर लो वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। वो हमेशा क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फुलफिल हो रहा है 6 plus 7 13, जो कि छोटा है 14 से, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सबको होना चाहिए, ये नहीं कि 2 हुआ तीसरा नहीं होगा, नहीं, सबको होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ चेक किया ना,
तीनों को यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। तो 7 + 14 21 वो ग्रेटर है 6 से, 6 + 14 20 ग्रेटर है 7 से, बट व्हेन यू ऐड 6 + 7 इट इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट इज 14. सो हियर द ट्रायंगल इनइक्वालिटीज रूल विल फॉल, गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. So it is not possible to construct a triangle by using these three values. Okay, so I think you all are understand how to check the whether from the given data whether you have given it is possible to draw a triangle or not. Okay, so come to the next question, that is question number 2. In question number 2, here you have given two sides of a triangle given. Two sides of a triangle, that is a first side. First side you have given what here? 5 centimeter, and second side you have given 9 centimeter. Then what is the third side? Third side. What is the possibility of third side? Okay, so according to triangle inequalities, when you add 5 + 9 you will get a 14. So here write according to triangle inequalities, sum of any two sides is always greater than third side. That means what? 14 जो है क्या हो जाएगा? बड़ा होगा किससे? थर्ड साइड से, क्योंकि थर्ड साइड क्या है? थर्ड साइड तो दिया हुआ नहीं है. तो ये दोनों का सम 14 हुआ. देखो दोनों का सम क्या हुआ? 14 हो गया. तो ये बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटीज. तो थर्ड साइड क्या होगा? थर्ड साइड इज क्या होगा? सो थर्ड साइड विल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड साइड क्या हो जाएगा? ऑलवेज लेस देन 14 से क्या होगा बच्चों? छोटा होगा. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ इन सी क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी सिंपल. ओके, हियर you have to fill the 3 sign by using 3 sign. That is I am drawing here a triangle. In question number 3 you have given first, that is a PA plus PB dot 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 and AB, and you have to use this sign and this sign and this sign to fill the blanks. Okay, so now in next question, PB plus PC dot 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 BC. Now in third you have given, that is AC, है ना, fill in the blanks, and PA plus PC, PA plus PC. So now here you have given required figure. I am drawing here. So ABC, this is a triangle ABC, and here at the middle you have P. So see in first question, that is PA. See PA, that is this side, sum of this side, and PB, sum of this side and this side is always greater than the third side. That is you have to use this sign. Again here also see PB and PC is always greater than this side, that is third side. Okay, now AC. So see here PA is what? PA and PC, this is greater than the third side, that is you have to use this sign. So this is the question number 3. So in next class we'll continue from question number 4, 5 and 6 and 7. So it is very simple. So okay then, thank you class.